Hello, dear children. Your learning buddy Aprajita is back here with your environmental studies class. So, all ready to start a new chapter with me? So, here I am with your environmental studies class 4 by Technology series Amit Publishing House. So, children, today we are going to start with chapter number 8, and the chapter is Animals Around Us. हमारे चारों तरफ कितने तरह के एनिमल्स होते हैं आपने देखे हैं ना? You must have seen the birds, the animals. There are different kinds of animals and birds around us. So today we are going to read the animals which we can see around us. And here there are some pictures. अब इन pictures में क्या देखते हैं आप? पहले हम ये पढ़ते हैं. Like humans, most of the wild animals live in groups. अब हम human beings हम लोग ग्रुप में रहते हैं ना, घरों में भी रहते हैं, घर में रहते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो we live in groups. And here there are some animals too who live in groups. अब वो कौन कौन से हैं? Here, these are wolves. A pack of wolves. Wolves के एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? Pack. A pack of wolves. Then here the lions are there. A pride of lions. Pride of lions. And next one is zebras. A herd of zebras. एक zebras के ग्रुप को क्या बोलते हैं? Herd बोलते हैं. So a pack of wolves, pride of lions, a herd of zebras. Now, some activity to do. Are there any other animals that live in groups? Name any 3. So, there are many more animals which live in groups. कौन-कौन से हैं वो? देखिए, gorillas जो है, gorillas also live in groups. Then, there are dolphins also which live in groups. Dolphins also live in groups. And bees also live in groups. Bees also live in groups. Now children, what do we say to a group of these animals? अब कुछ animals के names हैं यहाँ, उनके group को क्या बोलते हैं? A dash of elephants. Elephants के group को क्या बोला जाता है? Herd. A herd of elephants. Fine. A dash of monkeys. अब monkeys जब बहुत सारे monkeys एक साथ होते हैं उनको बोलते हैं troop. A troop of monkeys. A dash of fish. बहुत सारे fishes एक साथ. A school of fish. It's not the school in which you go. वो school नहीं. जब fishes बहुत सारी एक साथ एक group में होती हैं उनको बोलते हैं a school of fish. A dash of bees. It's a colony of bees. Colony of bees. Then a dash of owls. Owls के group को ना एक बड़ा interesting सा name है. You'll be very surprised to hear that name. It's known as a parliament of owls. Owls के group को बोलते हैं parliament. A parliament of owls. Parliament. Okay? The parliament of owls. And children, the last one is a dash of birds. Birds के जब बहुत सारी birds एक साथ होती हैं उसे बोलते हैं flock. A flock of birds. F-L-O-C-K. A flock of birds. Okay? Now, what next? Most animals live and move around in groups. They stay together too. Why do they stay together? वो एक साथ groups में क्यों घूमते हैं? Find food and water. Protect themselves from enemies. Raise their young ones. अब जब वो एक साथ रहते हैं, group में रहते हैं, तो it's easy for them to find food and water. या अपने young ones को protect करना उनके लिए easy हो जाता है क्योंकि जब वो group में रहते हैं तो बहुत सारे
एनिमल्स एक साथ होते हैं देखभाल करने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज. Animals that live in groups generally have leaders. अगर ग्रुप में है तो लीडर भी होगा उस ग्रुप का. The function of the leader is to watch out for the safety of the group. अब लीडर का काम क्या होता है कि अपने ग्रुप की सेफ्टी की देखभाल करना है. Female elephants called cows live with their young ones in groups. अब जो फीमेल एलिफेंट्स है उनको काउज बोला जाता है और वो अपने यंग वंस की देखभाल करती है, छोटे बेबी एलिफेंट्स की देखभाल करती है ग्रुप में रहकर. द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द ग्रुप. अब एलिफेंट्स में जो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है वो ग्रुप की लीडर होती है. फीमेल एलिफेंट जो होती है सबसे ओल्ड वो ग्रुप की लीडर है. When she senses danger, she lifts her trunk and trumpets loudly. What do you mean by trumpet? The trumpet is the sound made by the elephant. Elephant के sound को trumpet बोलते हैं. और जब ये old elephant जो लीडर होती है उसको कहीं डेंजर नजर आता है तो वो अपने ग्रुप को कैसे सतर्क करती है, कैसे उनको वो देती है, साइन देती है. वो अपने ट्रंक उठाती है और जोर से आवाज लगाती है, ट्रम्पेट. शी ट्रम्पेट्स वेरी लाउडली, जिससे कि ग्रुप को पता चल जाता है कि आगे डेंजर है. नाउ बिहेवियर ऑफ एनिमल. व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ एनिमल? कैसे बिहेव करते हैं? सम एनिमल्स आर वेरी फ्रेंडली व्हाइल सम आर वेरी शाय. कुछ एनिमल्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो आप एकदम से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स बहुत शर्मीले हैं. Animals such as cats, dogs and cows are friendly animals. Yes, you all know. If we are kind to these animals, they will come to us. Of course, अगर हम kindness नहीं दिखाएंगे तो वो क्यों आएंगे हमारे पास? हम उनके लिए kindness जब हम उनको शो करते हैं तो वो हमारे पास आते हैं. Animals like rabbits, squirrels and monkeys may not be as friendly as dogs and cats. अब डॉग्स एंड कैट्स की तरह ये जो मंकीज होते हैं, रैबिट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, ये इतने फ्रेंडली नहीं होते. आपने देखा है कभी एक स्क्विरल बैठी है अगर और आप उसके पास जाते हैं तो एकदम से भाग जाते हैं. इट्स द सेम विद द रैबिट आल्सो एंड द मंकीज आल्सो. ओह माय गॉड, मंकीज दे जस्ट इफ यू जस्ट वांट टू गो टू देम दे विल जस्ट स्केयर यू. डरा देते हैं आपको, वो आने नहीं देते अपने पास. टू रिमूव शाइनेस फ्रॉम एनिमल्स we must make them feel that we are their friends and we are not going to hurt them. अब इन एनिमल्स को कैसे फील करवाया जाए कि हम उनके फ्रेंड्स हैं. उनके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए हमें उनको ये दिखाना होता है कि हम उनको हर्ट नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उनके फ्रेंड बनना चाहते हैं. When an animal knows that we are not going to harm it, it will not run away from us. और जब एनिमल्स को ये समझ में आ जाता है कि हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको हर्ट नहीं करेंगे, तो वो हमसे दूर नहीं भागेंगे. एनिमल्स हेल्प ईच अदर. नाउ हाउ डू एनिमल्स हेल्प ईच अदर? एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? बर्ड्स कॉल्ड एग्रेट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द बैक्स ऑफ कैटल, डियर एंड एलिफेंट्स. अब आपने देखा होगा जब कैटल्स, ये काउज एंड ये बैठी होती है तो इनके ऊपर एक बर्ड आके बैठती है और ऐसे ही डियर और एलिफेंट्स के ऊपर भी बैठती है. इनको कहते हैं एग्रेट्स. दे फीड ऑन द इंसेक्ट्स फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ दीज एनिमल्स. अब इन कैटल्स, डियर्स और एलिफेंट्स के बॉडी पे तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ये फीड करते हैं, उनका खाना होता है. ये एग्रेट्स का ये खाना होता है. And what do? वो उसको खाते हैं. When these birds sense fear, they fly away, thus warning the animals. अब जैसे ही उनको लगता है कि कुछ डेंजर है तो ये बर्ड क्या, अगर उनको फियर लगता है, कुछ सेंस ऑफ फियर होता है तो वो ये बर्ड्स उड़ जाती हैं वहां से और इससे एनिमल को भी पता लग जाता है कि there is some danger ahead. Remoras is a type of fish that rides on top of turtles and large fishes. अब रेमोरा एक टाइप ऑफ फिश है
जो कि टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स के बैक पे राइड करती है और बड़ी बड़ी फिशेस के भी बैक पे वो राइड करती है. They feed on the leftover remains of the prey of these animals. They feed on the parasites found on the bodies of the host animal. अब जिस एनिमल के ऊपर ये राइड करती है उनकी बॉडीज में जो पैरासाइट्स होते हैं उनको वो खाती है. ये रेमोराजो फिश. The Egyptian plover sits inside the mouth of the crocodiles and cleans their teeth. Now देखो अब किस तरह से ये एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं. अब ये जो इजिप्शियन प्लोवर है ये देखो, दिस इज द इजिप्शियन प्लोवर एंड शी सिट्स इनसाइड द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल. वो बिना डर के उसके मुंह के अंदर बैठती है और उसके दांतों को साफ करती है क्रोकोडाइल के. The crocodile does not harm this bird. और ये क्रोकोडाइल भी इस बर्ड को नुकसान नहीं पहुंचाती. See look how easily she is sitting inside the mouth of the crocodile. Crocodile से तो हम सब कितना डरते हैं. Everybody is very afraid of this crocodile. Ears of animals. Now we'll learn about the ears. Animals के कानों की. Animals have ears which help them to hear. Some have long ears, some have short ones, while some do not have ears at all. अब कुछ एनिमल्स के तो ईयर्स लंबे होते हैं, कुछ एनिमल्स के छोटे होते हैं, कुछ एनिमल्स के होते ही नहीं हैं ईयर्स. Some animals like rabbits, elephants, foxes, giraffes and donkeys have big external ears. इनके बड़े बड़े कान होते हैं एनिमल्स. To catch a lot of sound. ये साउंड को कैच करने के लिए इनके बहुत बड़े बड़े कान हैं. Although the hippopotamus is a big animal, it has small ears. जो hippopotamus होता है, दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, it is very big, but इसको जो कान होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं. Birds don't have external ears. आपने किसी बर्ड के ears देखे हैं जिसके external ears बाहर से दिखते हुए ears? No. They just have two holes in their heads which are covered with feathers. अब उनके हेड पे दो होल्स होते हैं जो कि फेदर्स से कवर्ड होते हैं. Lizards too have small holes on their heads. और lizards के भी ऐसे ही external ears नहीं होते हैं, उनके भी हेड पे दो होल्स होते हैं. Some animals do not have ears. They can feel the movement or sound through the vibrations on the ground. Now children, can you tell me which is that animal which feels the vibration or sound through the vibration on the ground? Snake. उसके external ears नहीं होते हैं. देखिए कभी snake के ears? No. But it doesn't has an ear as ears, but it feels the vibration on the ground. उससे उसको पता लगता है कि आसपास कुछ है उसका. Body coverings. Now what type of body coverings are there in these animals? All the animals do not have the same kind of skin. सब animals के skin एक जैसे नहीं होते हैं. Some animals have skin with hair. Skin के ऊपर किसी animals के hair होते हैं, बाल होते हैं. Some have scales, while some have feathers covering their body. कुछ के स्केल्स होते हैं जैसे फिशेस, उनके स्केल्स होते हैं. स्नेक ऑल्सो हैज स्केल्स ऑन द बॉडी एंड कुछ एनिमल्स के फेदर्स होते हैं जिससे उनकी बॉडी कवर्ड होती है. मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. ज्यादातर जो मैमल्स हैं जो वो मैमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड उनके हेयर पे, उनके बॉडी पे हेयर होता है. ओके. Camels, deer, zebra have very short hair on their body. अब देखिए camels, deer, zebra इनके छोटे छोटे बाल होते हैं body. Polar bear, yak that live in cold regions have a thick coat of hair that helps to keep them warm by trapping the air over the skin and preventing it from escaping. अब जो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं
पोलर बेयर हो गए, याक हो गया, इनके बहुत थिक कोट ऑफ हेयर होता है। कैमल, डियर, इनकी तरह छोटे छोटे हेयर्स नहीं होते इनके बहुत मोटी लेयर होती है हेयर की। एंड व्हाई दे हैव दैट थिक कोट ऑफ हेयर? जस्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम दैट कोल्ड। और उससे क्या होता है, वो एयर जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है, ट्रैप हो जाती है अंदर ही। बाय ट्रैपिंग द एयर ओवर द स्किन, स्किन के ऊपर ही एयर ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है, जिससे कि उनको गर्माहट रहती है, हर वक्त गर्मी महसूस होती है। अदरवाइज दे लिव इन सच अ कोल्ड रीजन। ओके, animals like turtles, snakes, crocodiles have scales on their body. Yes, I told you just now. Turtles के भी scales होते हैं, snake के भी होते हैं, crocodiles के भी। They are called reptiles. और इन्हें क्या बोला जाता है? Snake, crocodile and turtles, they are known as reptiles. Porcupines have spikes on their body that protect them from their enemy. देखा है आपने porcupine कभी? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साही बोलते हैं। एंड उनके बिल्कुल कांटे जैसे वो निकले हुए होते हैं, स्पाइक्स निकले होते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं। इट्स जस्ट लाइक थॉर्न, और वो उनको प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से। Birds have feathers that help them to fly and keep warm. अब बर्ड्स के क्या होते हैं बॉडी पे? फेदर्स होते हैं, जो कि उन्हें उड़ने में मदद करता है और उनको गर्मी भी रखता है। Now children, this was all about the animals. आपने देखा किस तरह से एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, how they live in groups. कुछ एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, और वो किस तरह से अपने young ones की देखभाल करते हैं. And what are the skin types of the animals? We have learned all this in this chapter. Now, some testing time. Test yourself. Why do some animals have big ears? Some animals have very big ears so that they can hear a lot of sound. They hear a lot of sound with those big ears. Why do animals living in polar regions have thick coat of hair? Animals living in the polar region have thick coat of hair so that they keep themselves warm. To keep them warm, they have the thick coat of hair which prevents the air from escaping outside, and the air is inside on the skin. It is prevented inside the skin only, on the skin only, so that they feel the warmth in that cold region. Now tick the correct option. Animals that have hair on their body are called birds, reptiles, mammals or bees. किनके hairs होते ही हैं body पे? The mammals have hair on their body. An animal that lives in cold region has a thick coat of hair to keep them warm are, कौन से हैं वो animals? Polar bear, bird, snake, all of these. Polar bear. Only the polar bear lives in cold regions. Animals live in groups for safety, to keep each other warm, because they find food in specific area where they can gather and eat, all of the above. Only this option is correct. Animals live in groups for safety. Take this one. Egrets are found on the backs of cattle, fish, crocodile, all of the above. Egrets कहाँ पाई जाती है? Egrets are found on the back of the cattle. So take cattle. Okay? Now, fill in the blanks. Most animals dash and dash around in groups. Most animals live and move around in groups. Most animals live and move around in groups. Okay, children, the next one is the function of the dash is to dash out for the safety of the group. The function of the leader.
The function of the leader is to watch out the safety of the group. Some animals are very dash, while some are dash. कैसे होते हैं animals? कुछ animals friendly होते हैं. Some animals are very friendly, while some are shy. कुछ शर्मीले होते हैं. Dash is a type of fish that rides on top of turtles. Remora is a type of fish. Remora is a type of fish that rides on the top of the turtles. Birds don't have dash ears. Birds के क्या नहीं होते? They don't have external ears. बाहर निकले हुए ears ऐसे नहीं होते. Porcupines have dash on their body to protect themselves from their enemy. They have spikes on their body. Spikes on their body. Fine? Now, the next thing is name two animals that move in groups. कौन से ऐसे दो animals हैं जो groups में move करते हैं? They are elephants and और क्या पढ़ा था हमने अभी? Wolves. Okay? Are shy by nature. जो शर्मीले होते हैं animals कौन से हैं? Rabbits and squirrels. Squirrels. Fine? Are playful. कौन होते हैं playful? Dogs and cats are playful. Yes. Dogs and cats. Have big ears. बड़े बड़े कान होते हैं जिनके. कौन है वो? Giraffe. Yes. Giraffe has big ears, and then elephant has big ears. H-A-N-T-S. Elephants also have big ears. Okay? Answer the following questions. Why are ears important for animals? Ears are important for the animals so that they can hear the sound. They can hear the sound coming and they can protect themselves from the danger. They are able to know the danger which is coming ahead. They can listen to the sound and they can judge that the enemy is ahead and what danger is coming ahead. Okay, children, now the next one is, why do you think different animals have different body coverings? The different animals have their different body coverings according to their need and the environment. Like the fur protects the mammals, gives them warmth. Fur gives the warmth to the animals, to the mammals, and the feathers protect the birds. They help them to fly too, and the scales protect the reptiles. So it's all upon the adaptation, according to the need and environment. So next is, do you think fur plays an important role in the life of the polar animals? How? अभी हमने पढ़ा ना कि फर जो होता है वो पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको वार्मथ देता है. So yes, the fur plays an important role in the life of polar animals as the thick coat of the fur gives them warmth to fight against, to protect against the cold in that polar region. And what happens? The fur doesn't allow the air to move out so that the body remains warm. Now give examples of animals that are found in a helpful relationship. The animals which are found in a helpful relationship are the clownfish and the sea animal. So the clownfish and the sea animal. How do they help in a helpful relationship? The clownfish, it provides food and the sea animal gets the food and clownfish gets the protection. The clownfish gets the protection and the sea animal gets the food. So in this way they are helpful in a
They are found in a helpful relationship. So children, now let's come to the activities. Humans are harming themselves by destroying the jungles. Do you agree? We human beings, we are destroying the jungles. पेड़ काट रहे हैं, jungles खराब हो रहे हैं, jungles finish हो रहे हैं. So are we doing the right thing? No. We are harming ourselves only. क्योंकि जंगल अगर फिनिश हो जाएंगे, where will these animals go? All the life cycle will be disturbed. पूरी life cycle जो है वो disturb हो जाएगी. इन animals को रहने के लिए जगह नहीं होगी. If the animals will not have their habitat to live, where will they go? They will definitely come to the cities. Yes, वो कहाँ जाएंगे? जंगल नहीं होंगे उनके लिए रहने के लिए, तो कहाँ जाएंगे वो? Cities की तरफ भागेंगे, and then they would harm us. They will definitely harm us because they also need food to eat. They also need a place to live. Where will they live? So definitely we are harming ourselves only by destroying the jungles. Now collect pictures of animals, birds and fish with the unusual and attractive fur, feather, spikes or scales. अब देखिए, कुछ birds, fish, इन सब के कुछ birds के unusual feathers होते हैं and they are very beautiful too. तो कुछ ऐसे birds के अगर feathers मिलते हैं आपको या किसी के spikes मिलते हैं, spikes तो porcupine के ही होते हैं, just collect them. और fur या scale कहीं से आप collect कर सकते हैं, तो just collect them, collect the pictures and make a collage and describe each animal's features in one sentence. हर एक उस एनिमल का जिसका आपको फर मिला है या फेदर मिला है, कुछ मिला है, उसका फीचर डिस्क्राइब करिए इन वन लाइन. Some people kill animals and sell the skin for money. Do you think it is fair? क्या ये ठीक है? हम एनिमल्स को मारते हैं और उनके स्किन को बेचते हैं just to earn some money. No, this is totally wrong. This should be banned. Hunting should be banned. Hunting नहीं होगी तो skin भी नहीं ले पाएंगे animals का. Because if we will harm the animals, as I told you, the life cycle will get disturbed. हम अपने छोटे से earning के लिए हम उन animals को, we should not kill them. Make an attractive poster on we should not be cruel to animals. एक बहुत सुंदर सा पोस्टर बनाइए जिसमें कि ये शो करे कि हमें we should love animals. हमें cruelty नहीं दिखानी है animals के प्रति. We should not harm them. We should not be cruel to the animals. So make an attractive poster. So children, here we end the chapter and I hope you have learned a lot in this chapter about the animals. So stay excited for the clamp of another video. I'll be back with a new chapter for you. Till then, bye.